So let's go to zone, date and time. Both the things we would have to have a look at. Zone, date and time. Let's start debugging the code now. Again, like always, consistent in design. It is so very easy for anybody to use methods from, with, parse, of. In all these classes, they will have the same meaning. They will be used with different classes. They will carry out similar kind of operation for that respective class. So you don't really have to memorize ये method क्या करेगा, of क्या करेगा, with क्या करेगा, from क्या करेगा. What it does for one class, similar kind of operation do for other class. Design is very good. It just becomes so very easy for somebody to start understanding the codes that have been written in the Java IC8. Okay, I say now that means it's going to give me the current instance. So let's print this date and time. So when I print this date and time, I'm going to have date and time everything as per the current time zone. Let's see. So we print it. Strange, it has not got printed. Here we go. So we got zone, date and time. Date है आपका और ये फिर आपका टाइम है. टाइम में क्या है? आर है, मिनट है, सेकेंड है, ये मिली सेकेंड्स है, फिर ये टाइम जोन है आपका. टाइम जोन इज 5.5 hours अहेड एंड इसको स्ट्रिंग आईडी में कहा जाता है एशिया कैलकाटा. So we are 5.5 hours ahead from Greenwich Mean Time UTC and it's represented as string format में ID क्या है इसका? तो एशिया कैलकाटा. Okay, fine. I say time zone of plus 53030. अरे नाउ से तो आपको आपका टाइम जोन मिल ही रहा था. But suppose I was in Bangladesh and Bangladesh was 6 hours. So I could have said 0600. So I could have got time zone ID of Bangladesh. Currently, I'm just showing you how to get an object. One was time zone date and time dot now. You got date and time as. पर अभी date और time नहीं चाहिए. मुझे सिर्फ ID चाहिए था. So I say zone ID of 5 hours 30 minutes. Plus plus minus दोनों लिखना होगा because London के on the left hand side, America and Canada, they will have negative time zone. That means they are behind London and we are ahead of London. Okay, in whatever sense you take. Okay, zone ID of. So I pass the time that how many hours we are ahead of London, behind of London, whatever it is, Greenwich Mean Time. And then once we have this zone ID object, we could have printed. How am I going to use this? Here we just said zone ID date and time. Say I was in Bangladesh and I wanted to know the time for Bangladesh for given date and time. Bangladesh की सबसे कितना है? So what do? I say date time of. Here we said date time dot now. Now factory method always construct objects and give. Of in remember in all the examples of you've supplied some data. With the supplied data, it constructed an object and supplied to us. So you don't really have to remember the constructor. This of method. So what I'm doing is this also of method. You supplied the data, it constructed object and supplied to us. So likewise, I say zone date and time of. I say this is my year, this is month, this is my day, this is my hour, this is minute, this is second. Okay, so I'm passing all the information to this of method. And that's the last one is nanoseconds and not milliseconds. And ये कौन सा zone ID है? I could have passed Bangladesh zone ID just by writing over here 6:00. That would have been Bangladesh time. Yeah, 5:00. That would have been Pakistan time. They're half an hour before us. Okay, so whichever zone ID that you pass, you will get date and time according to that time zone. And when I print it, I got the same object. Okay, so same object means whatever date and time that we have passed. Note I have passed the components. I have passed to 24th of 4th April 4th है, 7th of April है, 15 बजे है, and these are milliseconds and this is nanoseconds. I got that particular. So if you pass any date and time, and you supply time zone, time ID, zone ID, whichever zone ID that you supply, accordingly you will get the date and time in that particular zone. I say now date time dot now. We just saw that. I print it once again. I got it. Now उसमें से year component क्या है? तो year component is 2020. उसमें से month component कौन सा है? April है. उसमें से month का value क्या है? Month gave you words and value will give you in digits. So when I say month का value क्या है? तो month का value 4 है. Get day of week. Okay, so it says it's Friday. Get day of the month. Or it says it's the 10th day of the month. Get day of the year. I do not know for what purpose you will use it. 101 day. Okay, it's so एक दिन हो गया. Oh, so nice. Okay, and then I say R क्या है? R 19 है. Minutes कितने हैं? 22 है. Seconds कितने हैं? 37 है. Nanoseconds भी ढूंढ सकते थे, but क्या करना है उनका? Anyway, I now say zone ID date and time. This is my date and time object that we just saw. Okay, I say with month 5. With always appears to update the object. It does not update the object, it constructs a new object and supplies to us. So it will construct an object. Currently my month is 4. So with month 5, when I say it's going to change my month to 5, it's May. And when I change month to May, month has been altered. Actually, the word altered is also not right. It constructs a new object with the altered data. Original object does not get changed. Then I say zone date time, day after tomorrow, like plus and minus method that we have seen. And we can pass period, अगर date की बात करें, duration, period, something this means we can pass.
तो ऐसे डेज में आएगा तो पीरियड, टाइम में आएगा तो ड्यूरेशन, दोनों इंस्टेंट ही है। ऐसे डेट टाइम जोन, जोन डेट टाइम प्लस पीरियड ऑफ डे 3। सो टुडे इज, तो वी आर ऑन मे 10th में है, बिकॉज मे 10th क्यों, बिकॉज यहाँ हमने कहीं तो चेंज किया विथ मंथ 5, तो वी आर मे 5, तो मे 10th मे पे है, 10 मई के 3 दिन बाद, तो 10 मई के 3 दिन बाद कौन है, 13th मे है, प्लस तो 10th मई के एक दिन पहला वाला डे कौन सा है, ओके तो यस्टरडे, तो ऐसे माइनस पीरियड ऑफ डेज 1 डे माइनस कर दिया, तो ये जो 13 था, ओके तो उसकी जगह ये 9 कैसे हो गया, ये 9 की बात नहीं है, 10th है हमारा, 10th के 3 दिन आगे 13 है और 10 के एक दिन पीछे 9 है। ओके नाउ टाइम जोन ऑफसेट। Okay, now we talked about time zone. Now we are looking at offset. Offset is the amount of time that the time zone differs from Greenwich या UTC. तो India Mumbai time MZ offset is 5.5 hour ahead of UTC. तो time z offset of 5 and 30 hours. तो 5.5 hours ahead कौन है, तो मुंबई है, ये आपका offset आ गया. Now what do I do with this offset? I say offset dot normalized. When I say offset dot normalized, ये आपको सिर्फ उसी को नंबर को प्रिंट कर रहा है, आईडी प्रिंट कर रहा है. अरे बट where do I use this? I'll have to use this in some kind of fashion. Okay, so we can use it while you convert. Other places we'll have to use this zone ID. Once we have this zone ID, remember एक बार normalize कहने पर आपको zone ID आ गया. And zone ID से हम लोग क्या कर सकते थे? Remember this example. If I had a zone ID, we could get any date and get that date time as per that particular zone ID. So zone ID is important. So if you are, you know you are 5.5 hour ahead, तो आपको किसी भी कंट्री का डेटा टाइम अवेलेबल है, तो आप उसमें अपना जोन आईडी डाल दीजिएगा एंड गेट द डेट एंड टाइम अकॉर्डिंग टू योर ओन जोन आईडी. तो जोन आईडी वाज इंपॉर्टेंट. तो व्हाट डिड वी डू, जोन ऑफसेट से ऑफसेट ले लिया, ऑफसेट को हमने कहा नॉर्मलाइज, उसमें जोन आईडी दे दिया एंड आई कुड यूज दिस जोन आईडी फॉर कैरिंग आउट दिस ऑपरेशंस. एनीवे नाउ मुंबई गेट डिस्प्ले नेम. अरे ये जो नेम था 5 and 30 hours, दैट वाज नॉट वेरी गुड. सैमसंग टेक्सटाइल कौन सा है, फुल है. लोकल कौन सा है, इंग्लिश एज स्पोकन इन इंडिया. तो इंग्लिश एज स्पोकन इंडिया के हिसाब से ये जो जोन आईडी है 5 and 30, उसका मुझे स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन बताइए. तो इसका स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ये आ गया आपका स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन. व्हाट यू वुड लाइक टू डू, इट्स अ स्ट्रिंग. ये जोन हियर इज अ स्ट्रिंग आ गया. ये दिस वन जोन आईडी ऑब्जेक्ट था, उसके अंदर से स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट आ गया फुल फॉर्मेट में एज पर द इंडियन लोकल. Now, if my zone ID is Paris, I print Paris zone ID. तो ये ID क्या है उसका, Paris है. Okay, I print that zone ID. Likewise, I could have printed this particular zone ID. कहाँ गया zone ID, Mumbai ID. I could have got that particular zone ID. ये कौन सा आ गया, Paris. Okay, I had passed over of Paris, Europe. Likewise, I say zone ID of Asia Calcutta. So when I say zone ID of Asia Calcutta, so that means if you're constructing, you can either pass the offset or you can pass the string. Both the things are okay. If you do not know आपका zone ID कितने घंटे आगे है, तो एशिया कैलकाटा कहिएगा. आपको मालूम है 5.5 घंटे आगे है, तो ठीक है. lot of times we do not know. Suppose if I ask you what's the time now in Abu Dhabi, now that will be difficult. या if I ask you what's the time in Bangkok, that will be difficult. तो बैंकॉक का ऑफसेट आपको मालूम नहीं रहेगा, बट बैंकॉक एशिया ये तो मालूम है ना. So I could rather say Asia / Bangkok, and I will get the ID. So that's how you could work with zone date and time. So we're going to look at date time format class. It comes from this package called as format once again. So if you look at this format package called as java.time.format, so new package called as format. So from this package format, we'll have this class called as DateTime format. And we have maybe various more style, format styles is what we're going to look at. And similar format styles, if you remember that date format class, we had full, long, medium, short, all those kind of formatting styles are available over here also. But this time we'll have to use this particular class for formatting. And it is used in both the places, DateTime formatter and DateTime formatter builder as well. Okay, so both places it is used. So I'm going to use only DateTime formatter as of now. Let's start. We are so very accustomed to this now. Now method will give you an instance with that date and local date as per the current system time. So we get date and time object as per the current system time. So I got local date, machine date, नहीं human date, human datable format में date आएगा, no component of time inside it, no component of time. Now what do? I got the local date object and there is no time component inside it. Look at that. It's only 2024-10, only the date part, because local date का object है, local date time का object नहीं लिया हमने. Formatting can be done for time as well, but currently we have taken it only for date. I say date dot format. How can I say local date dot format? If you look at this local date class, okay, this date class has an instance method format.
तो आई एम कॉलिंग couldn't open the doc has an instance method format, और इस फॉर्मेट में आपको क्या पास करना है, आपका फॉर्मेट पास करना है. Now when I'm passing this format, there are predefined formats which are there, so I don't really have to construct one. If they do not fulfill your requirement, then आपका custom format the way you like to have. उसके लिए आपको सिर्फ फॉर्मेटिंग कोड्स मालूम होने चाहिए. आई गिव द लिस्ट ऑफ कोड्स ऑन द नोट्स, तो कोड्स मालूम होने चाहिए. एंड नॉर्मल DDMMYY तो है ही आपके कोड्स, बट एरा चाहिए, जोन आईडी चाहिए, तो एडिशनली इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके सबके लिए कोड्स है. आई जस्ट शो यू हाउ टू यूज देम एंड देन आई गिव यू द लिस्ट. ओके, लुक एट दैट फॉर्मेट. ये जो लोकल बेसिक डेट फॉर्मेट है, ये आर, मिनट, सेकेंड, टाइम जोन के साथ भी ले रहा है, तो फॉर्मेट है. तो बेसिक ISO क्या देगा, लेट्स सी. तो बेसिक ISO डेट फॉर्मेट है, सो दैट्स अ प्रीडिफाइंड फॉर्मेट. वैसे ISO डेट फॉर्मेट भी है, तो दिस इज द प्रीडिफाइंड फॉर्मेट विच इज अवेलेबल. आई शो यू हाउ टू क्रिएट आवर ओन फॉर्मेट एज वेल, but that, well, there is a basic predefined format available. Why should we waste our time if this is fulfilling your requirement? If this is fulfilling your requirement, let's see whether this fulfills your requirement. So I now say date.format, DateTimeFormatter एक predefined format है, basic ISO date. So let's see whether this fulfills your requirement. Is this how you want the date to be printed? Definitely not. यार ये कैसे पता चलेगा, ये 20 ईयर था, ये मंथ था, ये ईयर था, डे था, कम से कम डैश तो चाहिए था दोनों के बीच में. बट दैट्स हाउ द फॉर्मेट इज. शायद आपको कोई कोड बनाना था, वॉट एवर पर्पज यू वुड लाइक टू, स्ट्रिंग देगा रिटर्न करके. सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस बेसिक ISO डेट फॉर्मेट. आई एम इंटरेस्टेड इन ISO डेट फॉर्मेट. लेट्स सी date.format as per this format, ISO date format class. Okay, so when you look at this ISO date format, we have this predefined format. तो देखते हैं इसके हिसाब से कैसा आ गया. हाँ, दिस इज बेटर, रीडेबल. उसमें डैश डाल दिया बीच में, -4, -10, दैट्स मोर रीडेबल. Now I get local date and time. What we earlier had was only date. Now we are having local date and time. So इसमें time का aspect भी आ जाएगा. अगर time aspect आ जाता है, तो I can say DateTime.format, DateTimeFormatter, ISO local time. We will not even look at this basic ISO time. I say ISO local time. Now when I say ISO local time, it's 24 hours clock that it has given me. Again 19, 35, 18, and nanoseconds. I do not want this, suppose. So I say ISO date time, another format. When I use ISO date time, it has given me date as well as time. ये format है, it's format. This format has given us, this format gave only from this date time object only the time, only the time. Now from the same date time object, I have got date and time both, but ISO format के हिसाब से. So ISO format के हिसाब से I got date and time both. I say ISO week format. Now let me explain. This is bit difficult. Difficult नहीं, till the time you don't look at the doc, it's confusing to understand. ये क्या कहता है? ये क्या कह रहा है, 2020 W15/5, ये कह रहा है वीक फॉर्मेट है. ईयर इज 2020, दिस इज द 15th वीक ऑफ दिस मंथ, एंड दिस इज द 5th डे ऑफ दिस वीक. इज दैट राइट? 5th डे ऑफ द वीक, एंड इज दैट राइट? मंडे अकॉर्डिंग टू दिस इज द फर्स्ट डे. तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 5th डे, एंड ये इस साल का 15th वीक है. और साल कौन सा था? 2000. दैट्स ISO week date format. So there are such predefined formats which I just showed you few one. ISO local date दिखाया मैंने, ISO date and time दिखाया, basic date दिखाया, ISO date दिखाया, and you can just explore and see what all other formats which are available. So simple, and if some of these are fulfilling your requirements, you can stick to them, but not always you may be happy. आपको ऐसा नहीं चाहिए था, आपको day month year चाहिए था, you want to change it, there is an option which is available. So I say now local date time formatter, I'm going to get object. So I say of format करके of localized date. Now when I call this method of localized date, it will actually give, let me explain this first, this part. Don't even look at this part. This will give you object of type date time formatter. I'm saying date type formatter में format कौन सा था? Remember ये instance method को आपको कॉल करना है, बट इंस्टेंस मेथड किस पे कॉल किया हमने? ये मेरा डेट टाइम ऑब्जेक्ट था, ये मेरा डेट टाइम ऑब्जेक्ट था, डेट टाइम ऑब्जेक्ट पे कॉल किया. अरे बट डेट फॉर्मेटिंग मेथड्स आल्सो हैव 2 मेथड्स, फॉर्मेट मेथड्स. तो अब ये फॉर्मेट मेथड ऑफ फॉर्मेट क्लास है, डेट फॉर्मेटर क्लास. क्या कह रहा हूँ मैं? और फॉर फर्स्ट लाइन लेट मी जस्ट ब्रेक इट इनटू 2 हाफ्स सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन हियर. हाउ डू आई ब्रेक इट? फर्स्ट लाइन के लिए मैं ब्रेक करता हूँ. व्हाट डू आई से? आई से just like what we did in date format class example, I say df is equal to this. So what I have done now, I first have a reference of type date format, date time formatter. I say date time format is equal to date time formatter dot look of localized date,
format style dot full. अभी एक format style predefined class है. Again, I just showed you at the beginning. This comes in the same package. फॉर्मेट पैकेज के अंदर फॉर्मेट स्टाइल दो क्लासेस फॉर डेट टाइम फॉर्मेटर एंड फॉर्मेट स्टाइल. तो मैं कह रहा हूँ ये फुल वाला जो फॉर्मेट स्टाइल है ना, उस हिसाब से इस क्लास का ऑब्जेक्ट मुझे दीजिएगा. गिव मी डेट टाइम फॉर्मेटर ऑब्जेक्ट विद दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट. तो फॉर द ऑफ लोकलाइज डेट विच योर डेट देयर है पास, उसके लिए वो फॉर्मेट करने वाला ऑब्जेक्ट है. सो आई जस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट डेट टाइम फॉर्मेट का ऑब्जेक्ट मेरे पास आ चुका है. सो डेट टाइम फॉर्मेट का ऑब्जेक्ट डॉट उसका इंस्टेंस मेथड फॉर्मेट एंड आई पास व्हाट योर डेट. So I first get the datetime format object, and the datetime format object dot format, and I pass today's date. This was today's date. I passed date. Date was a local date object that I passed. So when I pass this local date object, I'll get date formatted as per. Let me just debug the code from here, because otherwise, since I have added 2 lines, here I say debug project. So I construct an object of type datetime formatter, and using this object of datetime formatter, I format today's date. So this is the format that we have, full format है. तो full format में date कैसे represent होता है? Let's have a look at it. तो full format में date आ रहा है Friday 10 April 2020. Good. Only date है. There is no time right now. Because my object that I passed is local date का object pass किया. Date time का object नहीं pass किया. I passed local date का object. Okay. I say long format में. So I am not going to write that 2 statements now. तो long format में date कैसे आएगा? कुछ और डिटेल्स आएंगे क्या? नहीं. कह रहा है 10 April 2020. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फ्राइडे सैटरडे. नहीं. मीडियम फॉर्मेट में कैसे आएगा? मीडियम फॉर्मेट में कैसे आ रहा है? 10 April 2020. ओके. एपी आ रहा, अप्रैल नहीं है. ये लॉन्ग में अप्रैल है या ईपीआर है, या डैश नहीं था. शॉर्ट फॉर्मेट में कैसे आएगा? डायरेक्ट इन डिजिट से आ जाएगा शॉर्ट फॉर्मेट में. 10/20 which fulfills your requirement. You can just stick to them. Now let's go to time. I say local time of hour, minute, seconds is what I have passed. So I construct an object of time, local time. Local time का मैंने object construct किया. 13 means 1 o'clock. तो 1:12:45. I say zone date and time of date time. Date मेरा local date का object है. Time मेरा local time का object है. And zone ID. यहाँ जो zone ID आप पास करो, यहाँ मुंबई ID पास करते ना, zone ID ऑफ, तो काम बन जाता. तो it will give me the date time object. This was local date, this was local time. एंड जिस जोन आईडी पास करोगे उस जोन के हिसाब से डेट एंड टाइम का ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा. जोन डेट एंड टाइम का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, which will also have zone information inside. So we get that zone information. Now once we have that information, which is my zone? My zone ID is Asia Calcutta. Now date time formatter dot of localize date time. This will only give you date time format object. उस ऑब्जेक्ट को कॉल यूज करके आई एम कॉलिंग फॉर्मेट मेथड. आई एम पास zone date and time. I am not just passing date and date. I am passing zone date and time. Now when I pass zone date and time, as per in full format, how will it look like? It says Friday 10th April 20, 1 hour 12 minutes 45 seconds. आशीष सर, आपको 12 hours clock चाहिए था, 12 hours clock आ गया. But instead of date time, I could have only work with time. That could also work. Time के हिसाब से time को ही format करते हैं only for full format. So it could have given you time in 12 hours clock. 24 hours नहीं है, मैंने 13 pass किया है. Can you see that? I had passed 13:12, and what it is printed is 1:12:45. Okay, आगे चलते. लॉन्ग फॉर्मेट में कैसे आएगा? लेट्स हैव इट इन लॉन्ग फॉर्मेट. तो लॉन्ग फॉर्मेट में स्ट्रिंग कैसे आएगा? अरे दिस फार बेटर टू रीड. ये इतना बड़ा लंबा चौड़ा कौन पड़ेगा? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 10th April 2020 at so and so 1:12:45. सो नाइस. ऑल्सो विद द वर्ड एट. खुद ऐड किया उसने. ओके. मीडियम फॉर्मेट में कैसे आएगा? तो मीडियम फॉर्मेट में चाहिए था, दिस इज स्टिल शॉर्टर. ओके. So you could try out with only time object being passed instead of date time object being passed. We passed date, we have passed zone date and time. You could only pass time and get time in whatever 12 hours clock if you want to know. Here we go. And short file में क्या आ गया? अरे shortest possible 1 hour 12 minutes. I'm not even interested in the second part. So this is how you could format your date and time. And you could just explore various formats. But for some reason, from all this format, you do not like any other format. No issues. You can construct your own. So I say date time formatter of pattern. आपका खुद का pattern. You give your pattern. I have used only for date. You could use it for time as well. So I create my own pattern, and using this object, I'm going to format the object now. So I construct object F1 the way we had constructed. Note over here. Here we had constructed object using this predefined pattern. Okay, df, and then I say df.format. Now what we are doing is we are constructing object using our own pattern, your pattern of your own choice. Okay, so I have 2 patterns.
मैंने एक फॉर्मेटर में ऑफ पैटर्न, तो ये आपका पैटर्न है F1 इज अ फॉर्मेट डेट फॉर्मेटर ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है. Now once we have this format object which is available with us, you can use this format object F1 or you can use this formatter to format your date, which your date you would like to format. तो आपके पास ये ऑब्जेक्ट है and I would like to format the date. I have not used F1 and formatter over here right now, so let me use. तो I have only date. I had a date class object. तो आज का date class object इस पैटर्न के हिसाब से प्रिंट कर लेते हैं. तो let me print date class object. तो ऐसे this out. Date class object जो आपका df ओरिजिनल फॉर्मेट था, लॉन्ग वाला फॉर्मेट था, उस हिसाब से पहले प्रिंट कर देते हैं. देन आई शो यू अब मैं इसमें कैसे आएगा. दिस वाज योर फुल फॉर्मेट. Remember that df object we had already created, so I'm just reusing that object. But I'm not interested in this full format. Full format तो predefined है. मुझे तो मेरा वाला फॉर्मेट चाहिए था, ये फॉर्मेटर का. फर्स्ट आई रन इट. दोनों एक साथ ही कर लेते. दोनों पैटर्न अलग है. यह dd है तो आज का 2003 है तो ये 3 बताएगा और ये 03 बताएगा. सो दीज आर टू डिफरेंट फॉर्मेट. तो हियर आई गो. तो आई प्रिंट इट. आई यूज द फॉर्मेट. I say custom format 1. उसके लिए मैं लिख देता हूँ formatter dot और दूसरा custom format 2 and I'll just take other date now जिसमें वो impact दिखाता हूँ मैं आपको single date का. यहाँ लिखता हूँ F1. Okay. What I'll also do is I take another date. Okay. आज का डेट क्या है? 10th है. तो इसमें से ना आज के डेट में से 3 दिन कम कर देते हैं जस्ट टू बिकॉज ये डे का इम्पैक्ट नहीं आएगा तो ऐसा. तो आज के डेट में मैंने 3 डेज कम कर दिए. तो इट विल बी समवेयर 7. ओके. एंड देन लेट्स प्रिंट दिस. तो लेट्स जंप स्टार्ट फ्रॉम मेरा debug प्रोजेक्ट. सो जस्ट हाउ आई यूजिंग इट. तो हियर वी आर एंड वी स्टार्ट ट्रेसिंग द कोड. आज का डेट क्या है अभी देखो, ये 7th of April आ चुका है. तो आज का 10 है तो 10 में से मैं 3 क्रोनो यूनिट्स कम कर लिया, 10 आ गया. पैटर्न 2 पैटर्न क्रिएट कर लिए. वी कंस्ट्रक्टेड 2 डिफरेंट पैटर्न्स. आज का डेट एज पर फुल फॉर्मेट में हमने प्रिंट कर लिया. तो फुल फॉर्मेट में ट्यूजडे 7th of April 2020. दैट्स ओके. वो उसके हिसाब से आ गया प्रीडिफाइंड फुल फॉर्मेट के हिसाब से. ओके. डेटा ना इसे फॉर्मेटेड और फॉर्मेट डेट. फॉर्मेटेड तो माय कस्टम, इट्स माय ओन कस्टम फॉर्मेट MMDD YYY 3 वर्ड्स में डाला है. तो आ गया 3 April 7 2020. अरे नो, इस 7 की जगह 07 आना चाहिए था. तो F1 uses DD. So since it uses DD, आगे 07. So you can construct, you can create your own patterns. Likewise 12 hours clock का चाहिए, 24 hours clock का चाहिए. You have to just know the formatting codes which are available. And once you are aware with that formatting codes, use those codes and get your work done. So, but this is the template to do that work. Now, if I have to show you date time formatters, if I have to show you date time package, package. If I take you the package and directly type date time formatter, here we go. So there are date time formatter and date time formatter builder. So there are so many predefined formats which are there. I just took some of them. Okay. Anyway, you just have to be aware of these codes. Now, here the examples have been given. So once you are aware of these symbols, you can use these symbols and construct your own pattern. I use the simplest one and I use DDMMYY. तो आपको R AM PM चाहिए क्या, A यूज करो. क्लॉक ऑफ द R 12 hours क्लॉक चाहिए या 24 hours क्लॉक चाहिए. H से स्टार्ट करो तो 12 hours क्लॉक. K से स्टार्ट करो तो 24 hours क्लॉक. स्मॉल K का मतलब अलग है और अपर केस K का मतलब अलग है. तो you just can create your own format. And in this particular example, I have constructed my own format. And
For you to construct your own format, the only additional information that you need is this, and you construct your own pattern and start working with that particular pattern. Examples have also been given over here. How does this pattern behave? Here we go. Let's go on to the last part of the discussion here. So we did some work now, very small piece of code remaining. Anyway, I construct local date from given day, month and time. So 2017 month of October, off method always constructs objects and supply to and day is 7th. तो 7th of October 2017 का मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. ओके, डेट फॉर्मेट डॉट फॉर्मेट फॉर्मेटर. तो फॉर्मेटर कौन सा मेरा, ये कस्टम फॉर्मेट है. इस कस्टम फॉर्मेट के हिसाब से फॉर्मेट हो जाएगा. आई यूज टू डिफरेंट वेज टू यूज इट. लुक एट दिस, आई एम सेइंग फॉर्मेटर डॉट फॉर्मेट एंड डेट क्लास का, लोकल डेट क्लास के ऑब्जेक्ट में फॉर्मेट मेथड है, उसमें आप फॉर्मेटर पास करो. सो दिस आर टू डिफरेंट वर्जन. दिस आई करंटली रोट फॉर्मेट ऑब्जेक्ट के अंदर फॉर्मेट मेथड, ये लोकल डेट ऑब्जेक्ट का फॉर्मेट मेथड. तो फॉर्मेट ऑब्जेक्ट के अंदर फॉर्मेट मेथड में यू पास द डेट, डेट ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट मेथड में यू पास द फॉर्मेट, वन एंड द सेम. तो आई प्रिंट द डेट. Okay, exactly opposite. So if you got in that particular format, and according to formatter dot format date, that's also okay. Here we go. Yeah, date dot format f1 अलग format के हिसाब से October 7 2017 07 नोट कीजिएगा. Okay, local date of 2016 July 15 2016 का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. d2 dot format formatter, ये आ गया July 15 2016 का ऑब्जेक्ट. Now parsing, last part of our discussion, and we'll wind up. I know many of you आपका डेटा भी खत्म हो रहा है. Just give me 2 minutes. स्ट्रिंग, एक मेरे पास स्ट्रिंग है, फ्राइडे 10th April 2020 1:12:45 PM. थोड़ी देर पहले टाइम देखा था वो. तो दिस इज जस्ट दैट लॉन्ग स्टाइल, फुल स्टाइल स्ट्रिंग डेट. यू कुड हैव हैड इन एनी स्टाइल. आपका फॉर्मेट, आपका मनपसंद फॉर्मेट भी हो सकता था. आई एम सेइंग डेट टाइम फॉर्मेटर डॉट ऑफ लोकलाइज डेट टाइम, and here I pass my style. So I am saying this is the string. Suppose somebody has supplied me string, and if this string matches to this particular format, whichever format it matches, I can use that format object over here, style over here. So I'm saying this is string that has been given. I want to convert this string into an object. So if this string represent the full format, or if this string represent your own custom format, तो आपका custom format यहाँ डाल दो ना, pass your object. So I have this object. I say date time formatter of localized date and time, date time. I pass the format style, predefined format style full, because this particular string is in the full style. And then once I get that date formatter object, this is going to give you date format object. Keep in mind, हमें date format का object चाहिए, किसी भी तरीके से ले लो. ये आपके पास ये object था, df. This is object that you have. Date time format का, sorry, f1. You had format. इनसे भी काम कर सकते थे, but in that case पास करने के लिए date भी इसी स्टाइल में पास करना होगा. That's how simple it is. So this gives you date time formatter object. Okay, dot parse and date time string. So when I pass my string, it will pass the string, whatever string that I have passed. If that pattern matches, it will give me the date. So I got that date. Date time format object बन चुका है. And उसमें अब एक और घंटा बढ़ा दिया मैंने. तो इसमें 13 hours थे, एक plus 1 hour ना. ओके, ये हो गया 14 hours, 13 की जगह 14. Now you wondering, अरे ये सिंटैक्स बहुत मुश्किल लग रहा है. डोंट वरी अबाउट इट, लेट्स डू इन सिंपलर वे. सो वी ऑलरेडी हैड दिस फॉर्मेट ऑब्जेक्ट. फॉर्मेट कहता हूँ या माय फॉर्मेट एफ कह देता हूँ. सो दिस इज माय फॉर्मेट, एंड वी सॉ द आउटपुट इन दिस स्टाइल एज वेल. ये f1 के स्टाइल में आउटपुट कैसा था, ये 2 डिजिट वर्ड वाला था, 2 डिजिट वाला था आपका फॉर्मेट, कस्टम फॉर्मेट. ये अप्रैल 2 अक्टूबर, सो दिस वाज द फॉर्मेट. लेट मी टेक दिस फॉर डेट. You could have taken any date, that doesn't really matter as far as the style pattern matches. और मेरा date string है ना, अभी just have a look at, if this is my format and my date string, if my date string is equal to, this is my string, let's take this month, let's say this is April, let us take APR, no issues, APR April 7 2020, April 10 2020, whatever it is. So that's my date string. अरे string है, I want to convert it, so I'm going to do exactly what we have done over here. Here I got date formatter object. Here I already have a date format object f. So I'm going to use that object f to format. How? So I'm going to get that has only currently the date part. So I say let me check parse method क्या दे रहा है. So I say now f dot parse. So when I'm saying f dot parse, okay, तो f dot parse में मैं pass करूँगा मेरा character sequence. So I pass my string. I pass my string local date d object over. Okay, so local date d is not working, so it's giving you zone date time object. Let me check zone date time object है क्या. I say zone date time है क्या.
is returning a temporal accessor. This parse method is returning a temporal accessor object. So from this temporal accessor, I'm going to say local date dot from, and in this from I plan to pass this from. So I pass it. So if I say now my date is equal to this, so what has happened? From method required temporal accessor, pass method return us temporal accessor. तो फ्रॉम मेथड को क्या चाहिए? टेम्पोरल एक्सेसर चाहिए. पार्स ने वो टेम्पोरल एक्सेसर रिटर्न कर दिया. मेरे पास डेट आ गया आज का, ये जो भी 7th of April है. लेट मी प्रिंट दिस डेट फॉर यू एंड आई से फर्स्ट डेट इज इक्वल टू प्लस date. Let's see the last output. Did it pass that date correctly or not? String was converted to date. You got the date, and you can work with that quickly. So that's what we have to do in formatting. Any questions before we close down? Ask please.